धन्यवाद सविता जी, आप कार्यक्रम को शुरू करिए। इसका लाइव प्रसारण किया जा चुका है, शुरू किया जा चुका है। Let me start. Yes, ma'am, please. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Good evening to our distinguished guests and all the dear participants. I, Dr. Jyoti Singh, extend a warm welcome to all to this third module of 3-month certificate course of application of digital tools in teaching and learning Indian languages. We are back again after much needed small break. When we went for the break, the pandemic scenario was extremely bad. Many of our own colleagues of organizing committee were down with COVID. Not only we were affected, but entire India showed a surge in COVID cases. So we thought, let's take a small break and let everybody tend to themselves and their family members in this grim situation. Nevertheless, the course is also being run in self-learning mode. So one is not at loss if some classes are not being attended in direct learning mode by few of you. With this short premise, I would like to welcome our speaker for module 3. We are extremely proud and pleased to welcome today's esteemed speaker and resource person, Shri Ajay Kumar Sharma ji. Ajay ji is a renowned and a well-recognized face amongst library professionals in our country. He has designed several websites and is well-versed with the modern digital tools that are now need of the hour. Without such tools, it is really difficult to organize or attend online classes. So whether you are a teacher or a student, all of you will be benefited with his immense knowledge. I may now invite Dr. Savita to formally introduce and welcome Shri Ajay Kumar Sharma ji. Dr. Savita. मैं 1 मिनट आपको रोकना। Yes, please, sir. सविता जी, क्षमा चाहूँगा आपसे। अभी हमारे कुछ प्रतिभागी मैसेज कर रहे हैं कि सत्र को हिंदी में भी आयोजित किया जाए। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे रिसोर्स पर्सन को हमने विशेष आग्रह किया था, उनके पीपीटी इंग्लिश में रहेगा, लेकिन उनका व्याख्यान उसका अधिकांश भाग हिंदी में होगा। आप लोग इसकी चिंता ना करें। लेकिन चूंकि हमारे साथ इंग्लिश के भी प्रतिभागी हैं, लिहाजा हमें उनका भी ध्यान रखना है और आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखें। Thank you, sir. सविता जी, आप शुरू कीजिए। जी सर मैं शुरू कर रही हूँ। सर, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? There is some issue. Yeah, please. Dr. Pramod, sir, can you please share your screen? Yes, ma'am. Yes. Because my screen is having some glitches. Okay, no problem. Thank you, sir. Thank you, Dr. Jyoti, for welcoming all the participants, and welcome you all. This is unprecedented time, and that we are learning. That is one of the great things. Meet us today, Shri Ajay Kumar Sharma ji is here, and it's welcome you, sir. And Dr. Sharma ji is assistant librarian and in charge in China Bhavan Library, Vishwabharati, Shanti Niketan. Let me tell you a few things about sir. Mr. Ajay Sharma is working as an assistant librarian and in charge China Bhavan Library and additional in charge Hindi Bhavan Library, Vishwabharati, Shanti Niketan. Prior to selection in Vishwabharati University, he has worked as an assistant librarian in Central Library of Mangalayatan University, Aligarh. He is well recognized amongst the library professionals for his work as a project associate and INDEST AICTE Consortium of Ministry of Human Resources and Development, MHRD, at Central Library, IIT Delhi, under the coordinatorship of Dr. Jagdish Arora.
He holds a bachelor degree in arts, then BLIS, MLIS, and from BHU Varanasi and DCA from Computer Zone. And he has immense contribution in developing several websites. To name a few, he has developed web consultant of the Abhayananda Mahavidyalaya, Santhia, and ABSLA, All Bengal Schools Librarian Association, China Bhavan Vishwa Bharati Library Network, Vishwa Bharati Cooperative Credit Society Limited, personal web page, and 28th IASLIC National Seminar. He has several awards and honors which are lauded to him. Mr. Sharma has successfully cleared the National Eligibility Test UGC for lecturership in library science in 2005 December, and also received JRF award in NET conducted by UGC in 2006 in the same subject. Sir has successfully completed the Chinese study at the College of International Student of Yunnan University, Kunming, China from 2nd June 2016 to 12th June 2016. There are several academic and administrative distinctions which are on the name of Mr. Sharma, and I am just naming a few. He is a member of editorial committee of Vishwa Bharati website. He is a member of the National Advisory Board of ICDE 2019 to be held at Rajiv Gandhi University of Law, Punjab on 6th to 8th September 2019. Member of editorial board of journal entitled International Journal of Academic Research in Library and Information Science. Then he is associate editor of journal entitled as International Journal of Information Sources and Services, assistant editor of Vishwa Bharati Library e-newsletter, web consultant of Abhayananda Mahavidyalaya Santhia, member of editorial board of journal entitled as Sangeet Galaxy, editor of the journal entitled as International Journal of Digital Library Services, webmaster of China Bhavan Vishwa Bharati website. He is webmaster of Vishwa Bharati Library Network, and he is webmaster of ABSLA, All Bengal School Librarians Association. There are certain books which are to his credit. Sir has published Education for All in Knowledge Society, Role of School Libraries. This is edited by Subhal Chandra Vishwal, Nimai Chandra Saha, Ajay Kumar Sharma from Kolkata All Bengal Schools Librarians Association in 2010. Sir has published almost 24 research papers in various reputed national and international research journals. He has participated in seminar conferences, and he has been invited as a lecturer for several programs. Mr. Sharma has participated in almost 34 seminars, conferences, and presented his paper and delivered his lecture in the same. A very warm welcome to you, sir, and thank you for taking the time out from your busy schedule and giving us your valuable time. Thank you, sir. Thank you, Jyoti ma'am. Thank you, Dr. Savita ma'am, for thank you, sir. It's for my introduction. Yes, sir. May I now start our session? Sure, sir. Sure. It's over to you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. So, hello everyone. So, first of all, before starting my session, I would like to thank to the organizing committee for arranging such kind of event, and also for giving me such an opportunity to share my view on the topic which I have assigned. So today we will be talking on, may I share my screen? Yes, sir. Yes, sir, you can. Yes, sir. Yeah. So
today we will be talking on the Google tool for students, research scholars, and teachers. Is my screen is visible to all of you? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है, परफेक्टली ऑलराइट। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि हमें सूचना मिली है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करने के लिए, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर in both the language. However, my PPT will be in the English language, and I have not means included so typical English words so that we cannot understand. There is no tension about that. So जैसा कि हमने टॉपिक में आज हम लोग कवर कर रहे हैं, गूगल के बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हमारे एकेडमिक फील्ड में ज़रूरत पड़ सकते हैं, चाहे वो हमारे टीचिंग के पर्पस से हो या हमारे लर्निंग के पर्पस से हो। तो आज हम उनके बारे में, हालांकि गूगल के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और एक दिन में इन सारे चीज़ों को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। So somehow I will take some of the selective tools which is very important and is very relevant for our study and learning process that I will cover here. So पहले गूगल टूल के जानने के पहले, सबसे पहले हम लोगों को गूगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। So गूगल कहाँ से आया, गूगल को किसने बनाया, इत्यादि इत्यादि जानने के सिलसिले में कुछ हम लोग स्लाइड देखेंगे। So Google is an American multinational technology company that specializes in the internet related services and products which include online advertising technology, a search engine, cloud computing, software and hardware. It is considered one of the big four technological companies alongside Amazon, Apple and Microsoft. जैसा कि हम लोग गूगल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि ये बहुत ही रिनाउंड सर्च कंपनी, सर्च इंजन है और ये विश्व की चौथी बड़ी कंपनी है अमेजन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद। और ये इनके फीचर्स और इनके सर्विसेज के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि इवन हम लोगों, शायद हम लोगों में से बहुत लोग इनके बहुत सारे सर्विसेज को सुने भी नहीं होंगे और जाने भी नहीं होंगे कि ये सर्विस प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट गूगल वाज फाउंडेड इन द सितंबर 1998 बाय लॉरी पेज एंड सर्जी ब्रिन व्हाइल दे वेयर डूइंग PhD एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। इट्स a headquarter in Mountain View, California, nicknamed as Googleplex. Sundar Pichai was appointed CEO of the Google in 2015, replacing Larry Page, who became the CEO of Alphabet. Google.com is the most visited website in the world. Several other Google services also figure in the top 100 most visited website, including YouTube and Blogger. तो जैसा हम लोग यहाँ पे, मैंने सिंपल इंग्लिश में ही यूज किया है, आप लोगों को समझने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी बताता चलूं। तो गूगल जो है कि Google.com विश्व में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट्स है और गूगल की बहुत सारी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि हम लोग कुछ सर्विस बहुत अच्छे से जानते हैं, गूगल का यूट्यूब है और गूगल का ब्लॉगर है, ये बहुत सारी जो विजिट होने वाली वेबसाइट में है, इनमें इनका भी स्थान आता है। It offers service designed for work and productivity like Google Doc, Google Sheet, Google Slides, email like Gmail, scheduling and time management applications like Google Calendar, cloud storage, जैसा कि हम लोग जानते हैं Google Drive है, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। गूगल हम लोगों को बहुत तकरीबन 15 GB स्पेस हम लोग को प्रोवाइड करती है। Instant messaging and video chat like Google Duo, Google Hangout and Google Meet. लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए भी कुछ टूल्स हैं उनके गूगल के पास, जो कि गूगल ट्रांसलेट है। मैपिंग और नेविगेशन के लिए भी इनके पास टूल्स है, गूगल मैप है, गूगल वेज है, गूगल अर्थ है, स्ट्रीट व्यू है। वीडियो शेयरिंग के टूल्स हैं लाइक यूट्यूब है, नोट टेकिंग एप्लीकेशंस है लाइक गूगल कीप है,
गूगल जेमबोर्ड है, एंड फोटो ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक गूगल फोटोज है, गूगल पिकासा भी था पहले जो कि अभी इन्होंने बंद कर दिया है। ये इनका ओवरव्यू है, हालांकि वो एक स्क्रीन में कवर नहीं हो सकता है, इतने सारे इनके एप्लीकेशन है। सम ऑफ आई हैव टेकन ओनली वन screenshot here, so you can visit there on their website of the Google. So first of all we will take a Google search engine. A web search engine and Google core product. It receives over 3 million search query per day through its 189 regional language domain and available in 149 language. जैसा कि गूगल सर्च के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये गूगल का कोर प्रोडक्ट है, गूगल सर्च इंजन। हर कोई अगर गूगल को जानता है तो गूगल में सर्च करने के लिए ही जानता है कि अगर कुछ भी हमें नहीं आता है तो गूगल कर लो, कुछ भी हमें अगर प्रॉब्लम भी होता है तो हम लोग गूगल में एक्सपेक्ट करते हैं कि गूगल में हम अगर सर्च करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इट इज ए कोर प्रोडक्ट ऑफ द गूगल। इट रिसीव्स ओवर 3 बिलियन सर्च क्वेरी पर डे। ये 3 बिलियन सर्च क्वेरी पर डे रिसीव करता है, जो कि 189 रीजनल लैंग्वेज में कवर करता है। 189 रीजनल लैंग्वेज एंड 149 लैंग्वेज। Google search, also referred to as Google Web Search or simply Google, is a web search engine developed by Google. It is the most used search engine on the World Wide Web across all platforms, with 92.62% market share as of June 2009, handling more than 5.4 billion research searches per day. As I told you that it receives 3 billion search query per day. So you can see how many search query they are handling in a day. The order of search result returned by Google is based in part on the priority rank system called PageRank. मीन्स जो चीज़ें भी हम इंटरनेट में सर्च करते हैं वो हमारे सामने कैसे आती हैं उसके बारे में सेकेंड थर्ड लाइन में बताया गया है कि वो एक्चुअली गूगल इंडेक्स अपने आप में इंडेक्सिंग का काम इंडेक्सिंग पहले करता है और उसके बाद वो प्रायोरिटी रैंक के आधार पे वो आपका रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। कोई भी चीज़ हम लोग जब सर्च करते हैं तो हम लोगों को उसके बाहर तो हम देखते हैं कि वो कैसे रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अंदर में वो क्या प्रोसेस करता है उसके बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। तो एवरी टाइम व्हेन यू सर्च there may be thousands, sometimes million of web pages with helpful information they are providing. Even before you search, Google organize information about web pages in our search inbox. The inbox is like a library, except it contains more information than in all the world's libraries put together. In a fraction of a second, Google search algorithm sort through hundreds of billions of web pages in your search inbox to find the most relevant, useful result for what you are looking for. जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी चीज़ें जब हम लोग गूगल में सर्च करते हैं तो आप रिजल्ट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि millions of results they have displayed on your screen. To help you to find what you are looking for quickly, Google provides result in many useful formats, whether presented in a map, direction, image, videos, stories. Google constantly evolving with new way to present information. मीन्स जैसे ही गूगल रिजल्ट डिस्प्ले करता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पे केवल टेक्सुअल इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करता है, उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो भी होगा, अगर कोई आप लेक्चर या किसी चीज़ के बारे में, सपोज जो आपने जब कोविड-19 के बारे में अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो
कोविड-19 से रिलेटेड केवल आपका टेक्सुअल इंफॉर्मेशन दे विल नॉट प्रोवाइड, दे विल प्रोवाइड ऑल्सो सम वीडियो information, maybe some image formation they will provide. Even in the text format they will provide in the different file formats also. Some of the results come in the PDF format, some may be in the web format, web HTML format. So they are providing different types of format in their results. Now the second most important applications of the Google is Gmail. Most of us I think we are using Gmail. We have the Gmail account. So Gmail is also the important product of the Google. So Gmail is a free email service developed by Google. User can access Gmail on the web and using third-party program that synchronize email content through POP or IMAP protocol. Gmail started as a limited beta version released on April 1st, 2004. As I already told you, मैंने आप लोग पहले भी कहा कि Gmail Google ड्राइव के रूप में 15 GB प्रोवाइड करता है, जो कि ऑल टुगेदर होता है। मीन्स आपका ईमेल को लेके आपका गूगल ड्राइव में जो स्पेस होता है, इंक्लूडिंग फोटोज, यूट्यूब में आप जो वीडियो रखते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, इन सारे स्पेस को मिला दिया जाए तो गूगल आपको फ्री अकाउंट में आपको 15 GB का स्टोरेज प्रोवाइड करती है। गूगल का जो ईमेल है ये 105 भाषाओं में अवेलेबल है। Sending email is an excellent ally for communication in educational centers such as schools and institutions. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यमों में जीमेल बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, all educationals or even in the many other sectors also. Email is a customizable, faster, economic and effective communications channel that you can communicate with students, among students, teachers, parents, guardian, managers, and others also. Even in this pandemic situation, email even as Gmail is free, so and even their application Google Meet is also free of cost. So in this pandemic situation, most of the students have the Gmail account, and through their Gmail account they are able to attend their regular online classes with the help of Google Meet also. So this this Gmail is also very much important and that is already using in the purpose of the teaching and learning process in the different academic curricula. The next is the Google Classroom. The Google Classroom is also a very much important tool for our learning and teaching process. Google Classroom is the ultimate online hub for our classroom. It is used to publish assignment, create classes, make announcements, and organize digital files for your classroom. Even in this pandemic situations, most of the university or the school teacher or college teacher, even they are using this Google Classroom for their academic purposes. Rest assured that the information you stored on Google Classroom is kept secure. It's never sold to advertiser, neither is your student data. You also would not see any ad on Google Classroom. मीन्स क्लासरूम जो है गूगल क्लासरूम ये बहुत ही सिक्योर है। जब हम इसको क्लासरूम एजुकेशन के पर्पस से हम लोग यूज करते हैं, इसमें किसी तरीके का कोई एड नहीं आता है। इवन यू कैन ऑल्सो मैनेज द एड पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसमें जो एड आता है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं इसके सेटिंग में जा करके। नाइदर
आपके स्टूडेंट का ये डेटा भी कहीं शेयर नहीं करता है। सो इसलिए ये काफ़ी सिक्योर है एजुकेशन के पर्पज से। क्लास आप इसके थ्रू आप एजुकेशन टीचिंग के पर्पज में इसको यूज कर सकते हैं। Another benefit of Google Classroom is that along with every other application on this list is completely free. Google Classroom is also totally free. User need not have to pay any payment for using these applications. Google Classroom also allow you to communicate with your student via Gmail without even leaving the application. You can also start a conversation with one or with several or with all the students within the same interface. Means अगर हम अदर एप्लीकेशन क्लास गूगल क्लासरूम के अलावा अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें अगर हमें एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को अगर हम कम्युनिकेट करना है तो हमें एप्लीकेशन से बाहर निकल करके स्टूडेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ गूगल क्लासरूम, if you are using Google Classroom, you need not to leave the application and then you have to contact with the student. Even by using this Google Classroom, you can contact with one student or the several students within the same interface. So you need not to go out of the Google Classroom, then you have to contact. You can contact during your class also. So next application is the Google Drive. As we are already some point we have discussed that the Google Drive is actually the virtual space provided by the Google, and they are providing the 15 GB storage online to all of its user, and it is completely free of charge. आप लोग इसके लिए यूजर को कोई किसी तरीके का कोई फी नहीं देना होता है, और गूगल 15 GB स्टोरेज प्रोवाइड करती है जो कि इनके सारे एप्लीकेशंस को मिला करके है। आपका गूगल, आपका जीमेल में जितने भी जीमेल का जो स्पेस है, गूगल ड्राइव में आपका गूगल फोटोज रख सकते हैं, यूट्यूब में आप वीडियो रख सकते हैं। इन सबको ऑल टुगेदर अगर स्पेस काउंट किया जाए तो ऑल टुगेदर यू आर गेटिंग 15 GB ऑफ स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड beyond that, if you are looking to increase your web space, then you need not you have to pay their some assigned amount of fee. With Google Drive, you can store many different file types, including PDF files, audio files, image, Word document, video, and many more. गूगल ड्राइव में आप बहुत तरीके के फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि PDF फाइल्स होगा, आपके वर्ड फाइल होंगे, आप ऑडियो फाइल आप रिकॉर्ड वहाँ रख सकते हैं, इमेज रख सकते हैं, आपका वीडियो फाइल रह सकता है। इसके अलावा बहुत तरह के और भी जो डॉक्यूमेंट होंगे आप वहाँ पे गूगल ड्राइव में आप रख सकते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं। Perhaps it is most useful aspect of Google Drive is the ability to collaborate with the others. As I already told you, you can share all these files to your with your collaborators. Means अगर आप कोई इसमें फाइल क्रिएट करते हैं, अगर सपोज आपने कोई एक कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क कर रहे हैं और आपने एक राइटिंग वर्क शुरू किया है, some part of that writing what you have already written, and that may be reviewed or that may be further added by your research collaborator from sitting on the different sites. आपके सपोज अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो जैसे कि कोलैबोरेटिव रिसर्च, कुछ लोग मिल करके जो एक रिसर्च करते हैं, उसमें एक रिसर्च स्कॉलर सपोज मुंबई में बैठ के काम कर रहा है, उसने कुछ पार्ट अपने गूगल ड्राइव पे गूगल डॉक में अपडेट किया। अगर वो डॉक्यूमेंट अपने रिसर्च कोलैबोरेटर जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है उसके साथ शेयर करता है, तो वहाँ उस डॉक्यूमेंट को पढ़ करके वो फर्दर उसमें रिसर्च इनपुट ऐड करता है दिल्ली में बैठ करके, जो कि फिर से मुंबई में बैठ करके उसका जो पहले का रिसर्च कोलैबोरेटर है वो देख के रिव्यू करके फिर उसमें भी फर्दर ऐड कर सकता है। तो इस तरह के जो फैसिलिटी हैं, ये कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क को इसमें प्रमोट किया जा सकता है। इसमें इवन
even we are sitting in the remote farthest areas. So you can share files in folder with your students and allow them to view, download, or even create their own file to a central folder. Google Drive is a handy way to organize files that your people, their parents, and or your colleague can securely access. This is a cool tip for some of the cool tips for teachers. Just because it's a cloud based, so it doesn't mean that you cannot use Google Drive offline. Set up Google Drive for your offline use so that you can still access your files even when you are not connected to the internet. Even इसमें जनरली आम धारणा यही है कि गूगल ड्राइव को यूज करने के लिए हम लोगों को ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। हमारे पास जब इंटरनेट होगा तभी हम गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, बट ऐसी धारणा गलत है, क्योंकि गूगल ड्राइव को हम ऑफलाइन भी अपने डेस्कटॉप पे सेट कर सकते हैं और जब इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो पर भी हम इसको एक्सेस करके इसमें हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द गूगल डॉक। गूगल डॉक इज ऑफन कंफ्यूज विद द गूगल ड्राइव, बट द टू आर डिफरेंट। जैसा कि मैंने कहा, गूगल ड्राइव आपका एक वर्चुअल स्पेस है, बट गूगल डॉक इज एन गूगल टूल, गूगल का एक एप्लीकेशन है, उसके अंतर्गत जो कि आता है। वाइल गूगल ड्राइव इज एन ऑनलाइन स्टोरेज फॉर योर डिजिटल फाइल्स, गूगल डॉक इज ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल। जैसे हम लोग कंप्यूटर में, अगर हम डेस्कटॉप या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, उसी तरीके से ये ऑनलाइन वर्जन में गूगल हमें गूगल डॉक प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से गूगल, जैसे हम लोग कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, गूगल का एप्लीकेशन गूगल शीट उसी तरीके से सेम फंक्शनलिटी पे काम करता है। So Google Doc is also free and it is also a cloud based. You can also share with your collaborators. When it comes to the classroom, you can use Google Doc to go paperless. जैसा कि हमने कहा कि गूगल क्लासरूम जब हम यूज करते हैं तो उस दौरान हम गूगल डॉक को यूज कर सकते हैं पेपरलेस वर्क के लिए। जो भी हम जनरली जब हम फिजिकली क्लास करते हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे जो एक्टिविटी होते हैं वो उसमें हम पेपर यूज करते हैं और द ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, बट इन द केस ऑफ द गूगल क्लासरूम यू कैन यूज द गूगल डॉक। Ask a student to turn in the term paper, essay, book reports, etc. over Google Doc. This way you can make note, edit, suggestion all from your computers. No need to lug around a stack of papers. So इसमें जैसे कि डिजिटली हम लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन टर्न पेपर और ऐसे इसमें लिख सकते हैं, बुक रिपोर्ट्स लिख सकते हैं और ये एक बहुत ही सिंपल और सरल माध्यम है। इसको एडिट भी किया जा सकता है, इसमें सजेशंस भी लेकर कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम फिजिकली चारों तरफ से पेपर के ढेर के बीच में हम बैठ करके और पढ़ाई करते हैं, इसके लिए ये सब जरूरी नहीं है। सो यू कैन ऑल्सो यूज गूगल डॉक इन कोलैबोरेटिव असाइनमेंट, जैसा कि मैंने कहा, वेयर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वर्क ऑन ए राइटिंग प्रोजेक्ट टुगेदर। गूगल डॉक comes with a built-in chat module for real-time teamwork. तो गूगल डॉक में भी कोलैबोरेटिव रिसर्च वर्क हम कर सकते हैं कि अगर हम एक राइटिंग हमने यहाँ से लिखा, हमारा जो हम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, दे कैन ऑल्सो एड देयर इनपुट ऑन द सेम डॉक्यूमेंट from the different locations also. So this type of collaborative research work also feasible in the Google Doc also. The next tool is the Google Forms. So Google Form is also very much important nowadays, as because in this pandemic situations, every day there is a webinar going on, and most of the webinar is have their requirement to for the registration. So most of the organizer are using this Google Forms for the registration of their participants. Even
हम लोग इससे बाहर निकल करके भी अगर कुछ देख सकते हैं, गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम लोग बहुत सारे अपने जो क्वेश्चनियर रिसर्च पर्पस के रूप में हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अपना रिसर्च का क्वेश्चनियर गूगल फॉर्म में डिजाइन करके और उससे भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं अपने रिसर्च वर्क में। सो use Google Form to create pop quizzes and other assignments. The beauty of the Google Form is that these tests are self-grading. Life just keeps getting better. To set up a self-grading assessment, you will also start by creating a new form in Google Drive. Then you will populate your test and create an answer key. To make a fully functional, you need to install Flubaro as an add-on. जैसा कि हमने बताया कि ये इसमें ऑटोमेटिक भी काम करता है। अगर आप एक इसमें क्विज आप कराना चाहते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, तो आप क्विज आप इसमें तैयार कर लेंगे गूगल फॉर्म के थ्रू। इवन उसका आंसर आप सेट कर सकते हैं। आंसर सेट करके इवन अगर वो सही होगा तो उसको खुद से इवेलुएट करके दे विल प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट मार्किंग, and if they're wrong, then they cut the marking even also. So they can do automatically the self-grading assessment they can also do. And if you have implemented this Google Forms with the Google is also providing the self-generating certificates through the one app, AutoCAD. So if you have implemented the AutoCAD with the Google Forms or Google Quiz, then the candidate who secure some qualifying marks in the quiz, they will get the certificate automatically through these applications of AutoCAD. With Flubaro, you can assign tests to a specific student, record a response, and then send an email to both students and parents. Thus, Flubaro is a free add-on for Google Form. Flubaro is this is a add-on feature of the Google Form. Through that, you can add some add-on facility to the Google Forms, and you can increase the betterment of the test even also. So the next application is the Google Meet. So in this pandemic situations, this Google Meet, this the Zoom, the WebEx, these online webinar or online meeting tools have been getting more recognition for conducting this online webinar, the online classes. Even some of the institute, they are also taking or organizing or conducting the online classes through these applications. So Google Meet is also one of them, and it is available free of cost for some restrictions, using some restrictions. Google is making enterprise-grade video conferencing available to everyone. Now, anyone with a Google account can create an online meeting up to 100 participants and meet for up to 60 minutes per meeting, up to 24 hours per meeting through September 2020. But now it has been decreased, and they have, I think the participants, they are allowing the 100 participants, but they have decreased the time limit up to, I think, the 40 minutes or something like that. So the Google Meet is a video communication service developed by Google. It is one or two applications that constitute the new version of Google Hangout, the other being the Google Chat. The earlier, we can say, the Google Meet application these days we are using is the mixer of the two applications. Earlier, there are two separate applications which we were using. One of the Google Hangout. Through that we can using the video calling facility is also there, and another is the Google Chat. So now they have merged these applications, and they have created the separate applications called Google Meet.
Meet on the any device. Google Meet on any device. Invited guests can join on online video conference from their computers using any modern web browser. No software to install. On mobile device, they can join from the Google Meet applications. So in this Google Meet applications, you have to invite the person to whom you are going to talk or on the video conferencing, and after accepting the invitee, you can contact or you can communicate face-to-face interactions. So there is no separate installation is required. Most of the computers have the Google Meet applications in their software applications. On mobile device, there is also on the Google applications, the Google Meet is available. The next application is the Google Meet. Google Keep. The Google Keep is a note-taking software. It is also free of cost. And in the in the mobile, we are using note applications. Note application there, you can make a small notes in your mobile. Even you can also set the reminder for that. Likewise, the same, the Google is also providing. This is a very you can create through this Google Keep software. You can create a very handy notes in your web through this Google, and you can also set the reminder for that. So Google Keep is a note-taking service included as part of the free web-based Google Doc editor suite initially released on the March 2013 by the Google. Save your thoughts wherever you are, capture what's on your mind, add notes, list, photos, and audio to keep. Means if you are something in your mind, you can note down in your what your idea is coming, you can note on your Google Keep, and that you can even also you can share. They have the sharing facility also. You can share with your family, friends, and the research collaborators. It can help teacher and students in so many ways, like to organize a research paper or easy with notes. Some save time by adding common comments from Keep. Grab and save your whiteboard notes. Connect to to-do list with another person. Save website to note with one click. Move a big notes to Google Docs. You can create different types of notes in this Google Keep, and you can set reminder if in the case of students. जैसा कि अगर हम लोग स्टूडेंट के केस में अगर हम लोग देखते हैं, तो स्टूडेंट अगर कुछ पढ़ रहा है कहीं भी ऑनलाइन, कुछ अगर देख रहा है, अगर उन्होंने अपना गूगल अकाउंट क्रिएट किया है, तो दे कैन यूज द गूगल कीप ऑल्सो, गूगल कीप एप्लीकेशन ऑल्सो. सो सम पार्ट ऑफ दैट, इफ यू फील दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई रिसर्च वर्क और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई रिसर्च डिजिटेशंस और एनी रिसर्च प्रोजेक्ट, वो उस पार्ट को सेव कर सकते हैं. इवन होल पार्ट को, होल वेबसाइट को भी वो अपने गूगल कीप में सेव कर सकते हैं. बाद में उसको अगर वो कॉन्टेक्चुअल, अगर टेक्सुअल फॉर्मेट में अगर उन्होंने सेव किया है, तो उन सारे टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली और अपने गूगल डॉक में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको अपने रिसर्च कोलैबोरेटर, अपने गाइड से, अपने मेंटर से के साथ वो शेयर भी कर सकते हैं. The next application is the Google CS First. CS is denoted as the computer science for kids. So the Google can also teach us the computer science in some elementary idea they can provide us. So CS stands for the computer science. There is a little doubt that computer science is the face of the future. If you teach children from age 9 to 14, the Google CS is the first program is worth considering. Through this program, Google provide all training and material for starting and instructing a computer science class in your school. No experience needed. What a wonderful gift. Teaching your students a skill that you will continue to use the rest of their lives.
If you are thinking that you can you take a class on the basics of the computer science, you need not to worry about that. You use the Google CS first, and you can take the computer basic class for your the student age between 9 to 14. So on the Google CS. The next application we can discuss here is the Google Science Fair. As the term denotes, the Google also runs its own science fair. This online competition is open to students around the globe aged between 13 to 18 years. Winners are awarded scholarship funding, mentorship, and an educational trip also. In addition to competing on the local or regional stage, encourage your teen students to participate in the Google Science Fair this year. So every year they are organizing a Google Science Fair. So the student age between 13 to 18 years, they can participate in these competitions, and there are different types of award or scholarship. Even they have the educational trip to the foreign countries or foreign sightseeing even also. So you must encourage your the junior students to participate in that. The Google Hangout, as I earlier told you, that the Google Meet is now they have created the Google Meet application through the use of the Google Hangout and Google Chat. But somehow we can have a brief idea on the Google Hangout also. Very recently, the Google Hangout will be obsolete in the Google application tool. The Google is now going to stop these applications. So talk to your friend and family. Google Hangout let you video call, phone, or message to the people you love. There are a lot of great uses for Hangout in Air in the classroom. A favorite option is to host guest speakers for your classroom. With this tool, if you want to interview or interact with the special guest, but you cannot coordinate a visit, use Google Hangout on Air to do so. With this tool, your entire class can interact with the person on the other side of the screen by taking turns to ask questions. Another option for Hangout on Air is to teach a class remotely, which makes sense. You are collaborating with another teacher. While Hangout on Air is live broadcast, you also have an option to save the file as a private YouTube video. This way you can keep the record for future use also. But unfortunately, the Google is going to close these applications very soon. The next application is the Google Maps, a great companion to the geography lessons. And because this pandemic situations, the students and scholars from the academic level, there is very less chance to participate in the academic excursion. So this application can help you a lot in this context. मीन्स आप जैसा कि जानते हैं कि गूगल मैप के थ्रू बहुत सारे जो जोग्राफिकल मैप्स है हम अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, जो कि अभी इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोगों को, जैसे पहले हमारे जोग्राफी के जो स्टूडेंट्स होते थे उनको जोग्राफी का एक्सकर्शन टूर ले जाया जाता था अलग अलग जगहों में, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, even some landmarks to view the mountains and the other the sightseeing also. But now it is not possible. So through this application Google Meet, there are chances you have used Google Meet before. It is the most popular mapping tool on the internet that provide driving directions as well as a 360 street view to locations all around the globe. So
गूगल इवन अभी आप हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप गूगल मैप के थ्रू अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं, आपका कोई नोन लोकेशन नहीं है, you set an location on the Google map, they will give you even the street view also, and the Google map provide you the clear-cut directions to visit that unknown place also. So you can use in this classroom, you can use it in the classroom as a virtual atlas. This Google map can be used as a replacement of the atlas in the form of the virtual atlas. Pair the panorama to find stunning images from use about any location in the world. Google Map is a great companion to the geography lessons because it gives a sense of place to word on a map. The next applications is the Google Earth, a virtual field trip to the farthest reach to the globe. There is even some differences, means there is even confusion also. So what are the difference between the Google Earth and the Google Map? So here the very you can say Google Earth is one of the more fascinating tool available through Google. Use this application to explore the Earth in 3D. This is especially used in the geography and social studies, but can even come in the handy during history explorations also. Take your students on virtual field trip to the farthest reaches of the globe. In fact, you can use Google Earth in every major discipline, from computing, math equations, and understanding marine biology also. So download the desktop version of Google Earth or download the Google Earth plugin to view on the web. You can even access Google Earth through your mobile device also. While it's named Google Earth, you are not bound to just the celestial body when you're using this immerse tool. Explore the moon, see the face of Mars, or even zoom up close to distant galaxy far and far away. Means जैसा कि इसका नेम है गूगल अर्थ, you are not limited to the earth even also. You can also explore the any planet of the galaxy even you can have. So the next application which is very helpful for the teaching and learning process is the YouTube. It is also very renowned applications of the Google. It provides very high quality video on every topic that is very imaginable. So YouTube happened to be the internet's second largest search engine. It's true that you cannot find just about any answer on this popular video sites. However, this YouTube is an educational resource that you should definitely consider for free. High quality video on every topic imaginable, from Einstein theory of relativity to migratory pattern of wildebeest. You will find a wealth of information to support your lesson plan. जैसा कि अभी YouTube इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि अगर आप कुछ भी अगर पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, आप अगर आप YouTube पे डालें तो आपका उसका पूरा डिटेल आपको लेक्चर मिल जाता है। इवन आप कोई अगर रेसिपी देखना चाहते हैं, आपको कोई चीज़ बनाने खाना बनाने के लिए आपको अगर कुछ सीखना है, एवरीथिंग व्हाट you cannot imagine, even you put on in the Google tip, you will get and have a brief information on that on the Google YouTube. So this is very helpful for our students and teachers to create on the class lectures even, and you can upload there. Even this webinar session is also definitely is going to record, and that will be available on the YouTube also. So even a student can have the access of these lectures, they can get benefit of that
So the university and academic institutions are using this YouTube immensely for their academic activity. So before this Google Plus, I would like to add some more applications which even I have not created a slide for that. Some of you might be aware about that there is some more applications like Google Translate is also applications of the Google which can translate multiple forms of text and media, which include text, speech, and text within still or moving images. Especially it functions include written word translation. जैसा कि हम लोग गूगल ट्रांसलेट के बारे में जानते हैं, अगर हम कोई चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सॉरी इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन जानना चाहते हैं, दे कैन गूगल कैन ट्रांसलेट थ्रू इट्स ऐप दैट इज गूगल ट्रांसलेट. Some another applications like Google Scholar. गूगल की तरह ही एक गूगल स्कॉलर एप्लीकेशन है जो कि प्रोवाइड करता है, आपका स्कॉलरली सर्च प्रोवाइड करता है. और जितने भी स्कॉलरली सर्च मीन्स स्टडी रिलेटेड सर्च होंगे, रेदर आई विल सजेस्ट यू दैट बिफोर गोइंग टू सर्च एनी सर्च इन द गूगल, बेटर यू गो थ्रू द गूगल स्कॉलर. Google Scholar also provide the academic profile of the faculty or the research scholar with the list of their research papers included with the citations also, that how many citations this paper of the particular author is getting, and even certain duration, how much the accumulated citation has been gained, and what is the H index factor or I index factor of the any authors. So later on after this technical session, I will show you some hands-on on that also, how to create Google Scholar and how to use some of our important Google tools also. So coming to the next Google Plus, a way to network with other educators. So ever heard of Google Plus? It's a सर राजेश सर, आपका चित्र दिखना बंद हो गया, शायद आपने अपना वीडियो ऑफ किया हुआ है. हाँ एक्चुअली सर क्या है कि बहुत यहाँ पे बैंडविड्थ लो है सर. इफ आई विल स्टार्ट माय वीडियो देन द ऑडियो मे बी डिसरप्टेड. So I think so video is not necessary, so I have just muted my video. कोई दिक्कत तो नहीं सर, क्योंकि यहाँ इंटरनेट का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है सर. हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं. तो नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारा सर, इसमें गूगल प्लस है. गूगल प्लस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी हासिल करेंगे. एवर हियर्ड ऑफ द गूगल प्लस? इट्स गूगल आंसर टू सोशल मीडिया, and it's sorts of like a mess up between Facebook and Twitter. While there are many applications on Google social network, one of the best reason why a teacher should be on the Google Plus is to network with other educators. Like the Google, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अदर जो सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, और पहले किसी समय ऑरकुट हुआ करता था, ये सब सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन से उसी की तरह से गूगल ने गूगल प्लस लॉन्च किया है, जो कि एक इसमें आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना एक एकेडमिक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, सेम फील्ड एंड इवन ऑल्सो विद द अदर फील्ड्स, इवन विद यू कैन क्रिएट कम्युनिटीज, and you can also share your resources on the Google Plus. So this Google Plus is actually is working it's same as the other social networking applications. On Google Plus you can keep up with the latest trends in education, get much needed support, and participate in lively discussion with the fellow educators.
अदर जैसे कि हम अदर जो भी सोशल नेटवर्किंग का एप्लीकेशंस होता है, फेसबुक में जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हम गूगल प्लस में भी हम अदर एजुकेटर जो कि हमारे फॉलोअर होंगे या हम जिनको फॉलो करते होंगे उनके साथ हम किसी भी नए ट्रेंड जो कि जो कुछ भी नया चीज अभी इवॉल्व हो रहा है उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। The next application is the Google Calendar. गूगल कैलेंडर जैसा कि ये टर्म भी डिनोट कर रहा है कि ये जरूर कोई कैलेंडर से रिलेटेड होगा, तो बिल्कुल सही। ये गूगल कैलेंडर गूगल का एक कैलेंडर है जिसमें कि आप अपना प्रोग्राम शेड्यूल कर सकते हैं। वो प्रोग्राम शेड्यूल आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो उस प्रोग्राम शेड्यूल के लिए आपको रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं कि आप हमको बताओ कि एक दिन पहले या 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले उस प्रोग्राम के बारे में आप हमें बताएंगे। तो गूगल कैलेंडर उस तरह से काम करता है। जैसे हमारे मोबाइल में कैलेंडर है, मोबाइल में हम अलार्म सेट करते हैं, ऑन किसी भी पार्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करके हम एक रिमाइंडर क्रिएट कर देते हैं कि हाँ हमें फलाने तारीख को कोई लेक्चर डिलीवर करना है, तो हमें 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले आप हमें रिमाइंड करा दो। उसी तरीके से हम गूगल कैलेंडर में जा करके हम गूगल कीप के थ्रू, गूगल कीप में भी जा करके, जैसे गूगल कीप में मैंने बताया कि आप नोट क्रिएट कर सकते हैं। आप गूगल कीप में आप एक नोट क्रिएट करके कोई भी आप अपना रिसर्च नोट तैयार कर सकते हैं। तैयार करके आप उसको गूगल कैलेंडर में आपने रिमाइंड करा दिया। इवन आप पेपर वाइज भी आप नोट क्रिएट करके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि इस चीज को हमें इतने तारीख को रिमाइंड करा दो रिवीजन कराने के लिए। अगर हम सपोज कीजिए कि हिस्ट्री पे कोई हमारा पेपर है, हिस्ट्री का पेपर हमने एक नोट्स तैयार किया है गूगल कीप में और उसको रिमाइंडर के थ्रू हमने रिमाइंडर सेट कर दिया है। हमारा 25 तारीख को एग्जाम है, हमने सेट कर दिया कि 24 तारीख को रात में हमें ये रिमाइंड कराएगा। हम 23 तारीख को एग्जाम दे के आते हैं ज्योग्राफी का और 24 तारीख को हमारा हिस्ट्री का पेपर है, वो 23 तारीख को रात में वो हमें रिमाइंड कराएगा कि आपका कल एग्जाम है, आप ये पेपर को रिवाइज कीजिए। तो इस तरह से हम इसको एकेडमिक पर्पस में यूज कर सकते हैं गूगल कैलेंडर को। सो गूगल कैलेंडर इज द परफेक्ट वे टू ऑर्गेनाइज योर टाइम। Use Google Calendar to plan your daily schedule, set reminders to create a what to do list, and collaborate with the others. If you need to set up a parent teacher conference event, use this Google Calendar to help schedule and confirm. So you can even use Google Calendar for as your lesson planner also. As I told you, you can have a lesson planner also. This lesson on which date you are going to revise, or you are going to just have a glance on that. So you can set a plan on that. You can create a plan on that. So create it and then add the Google Calendar to your classroom even also, or the Google site also. So there are a lot of means and the medium through which you can use these the Google tools, varieties of ways you can use this in your academic purposes. So another tool, a very important tool, is the Google site. So through this Google sites you can use or you can create the Google site for your, means you can create a website, means Google sites के थ्रू आप एक अपना गूगल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं गूगल के स्पेस, वर्चुअल स्पेस पे। गूगल आपको ऑलरेडी टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, उस टेम्पलेट में जा कर के आप अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप उसमें अपने बारे में अपने बायो स्केच क्रिएट कर सकते हैं, अपना अचीवमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसका जब हैंड्स ऑन हम करेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या आप इसमें मैनेज कर सकते हैं गूगल साइट्स के थ्रू। सो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन एडिशन टू गूगल क्लासरूम, you may choose to create a website for your classroom. Enter Google Sites. गूगल क्लासरूम का डिजाइनिंग भी हम लोग गूगल साइट्स में कर सकते हैं। अगर हम लोग एक क्लासरूम बनाना चाहते हैं तो एक गूगल साइट में एक हमने वेबसाइट बनाया,
और उसके थ्रू ही हम लोग उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गूगल क्लासरूम एंड गूगल साइट्स? Access. Google Classroom is great, geared toward a student-teacher relationship. However, Google Site is open to students, parents, and fellow colleagues. Use Google Sites to quickly set up a functional and a relatively attractive website where you can do the following. Google Classroom में है कि आप उसमें स्टूडेंट्स और टीचर के पर्सपेक्टिव में आप गूगल क्लासरूम को देखते हैं, बट गूगल वेबसाइट्स इज ए वन वे कम्युनिकेशन. मीन्स केवल आप उसमें इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं. गूगल आपका जो वेबसाइट्स होगा उसमें कोई आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. सो दिस इज ए वन वे ऑफ कम्युनिकेशन. सो थ्रू दिस गूगल साइट्स व्हाट कैन डू फॉर your academic purposes, like you can post your announcement there. So this class means if you are going to schedule a class, then you can post an announcement. The Falna class will be held on this Falna date, like that. So publish classroom rules. Classroom का आप उसमें नियमावली आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि क्लासरूम में कोई भी इंटर करेगा तो क्या क्या रूल्स फॉलो करेगा. उसमें ऑडियो म्यूट कर देगा, वीडियो म्यूट कर लेगा. क्लास जब चल रहा है तो उस दौरान में कोई भी कुछ गॉसिप नहीं करेगा. क्लास के एंड में आपको क्वेश्चन रेज करना है. तो दिस टाइप ऑफ रूल्स यू कैन क्रिएट ऑन द गूगल साइट्स इन फॉर्म ऑफ अपकमिंग इवेंट्स. आने वाले दिनों में अगर कोई सेमिनार, कोई वेबिनार होता है तो आप उसका सूचना उस पर दे सकते हैं. क्रिएट ए विकीज फॉर योर क्लास प्रोजेक्ट्स. इसमें आप क्लास प्रोजेक्ट्स में अगर कुछ आप काम कर रहे हैं कोई प्रोजेक्ट पे, तो उसका आप विकी क्रिएट कर सकते हैं. विकी इज लाइक Wikipedia, you can say. Shortly here we are denoting the wikis here. Upload and share file. आप इसमें फाइल को अपलोड और शेयर भी कर सकते हैं. पोस्ट रीडिंग मटेरियल भी इसमें आप डाल सकते हैं. इंट्रोड्यूस टॉपिक और थीम ऑफ द मंथ. इस महीने क्या टॉपिक इंक्लूड होने वाला है वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं. तो गूगल साइट्स ब्रॉडली वी कैन से द एज यू आर विजिटिंग एनी वेबसाइट्स यू कैन even you can have the similar features on the Google sites also, but here the difference is that you need not to have to pay any payment for this creating and maintaining these Google sites. The next application is the Google Culture Institute. So here the another way to take a field trip without leaving the classroom. मीन्स ये जैसा कि आगे हम लोगों ने देखा कि गूगल क्लासरूम में भी बहुत सारे फैसिलिटी थे हम लोगों के पास, जो कि क्लासरूम से बिना निकले हुए ही हम गूगल किसी भी पार्टिसिपेंट्स को कॉल कर सकते थे. तो सिमिलरली इन द गूगल कल्चर इंस्टीट्यूट थ्रू दिस गूगल क्लासरूम से बिना बाहर निकले ही हम अगर कोई अपने स्टूडेंट ग्रुप को अगर हमें कुछ विजिट कराना है, like a very renowned museum, some photography of very renowned paintings or some artifacts gallery, then you can have the visit of this museum through this Culture Institute without leaving your classroom. So this type of facility the Google Culture is providing. So Google Culture Institute is an excellent additional to visual art classes. Actually this ये visual culture institute है जो आर्ट के बच्चे होते हैं, जो visual art के बच्चे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है. उनके क्लास के दौरान में टीचर्स ये एप्लीकेशन अक्सर यूज करते हैं. यूज दिस टूल टू इंट्रोड्यूस कल्चर अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू आर्ट. The next application is the Autodra. Autodra जैसा कि ये टर्म ही डिनोट कर रहा है कि ये कुछ ऐसा ड्राइंग टूल होगा जो कि ऑटो ड्रा करता हो, खुद से ड्राइंग कर लेता हो. तो बिल्कुल ये ऐसा ही है. This experimental tool from Google use artificial intelligence to turn your rough drawing into
polished और recognizable image. मीन्स इसका भी जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम आप लोगों को बहुत ही सरप्राइज होगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है. सपोज इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ, आप अगर एक कार बनाना चाह रहे हैं और अगर आप ये गूगल ड्रॉ को यूज कर रहे हैं, या अगर कोई बच्चा साइंस का कोई स्टूडेंट्स है, कोई ह्यूमन फिगर बनाना चाहता है, और वो डेफिनेटली वो तो आर्टिस्ट नहीं है कि पूरा 100% परफेक्ट बना दे, बट वो कोशिश जैसे ही करता है वो जस्ट सिमिलर टू अगर ह्यूमन इंटरफेस हुआ, तो ये यूजिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो एक आपको वो एक इमेजिनेशन देगा कि क्या आप ये ह्यूमन बॉडी बनाना चाहते हैं. अगर हाँ तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, आपका ड्राइंग बन गया है. आप अगर कोई एलिफेंट बना रहे हैं, आपको बनाने नहीं आता है, आप जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि एलिफेंट का शेप ऐसा होगा, बट ये ऑटो ड्रा उसको ऑटोमेटिक थ्रू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि आप हाथी बनाना चाह रहे हैं, और वो हाथी बना के आपको दे देगा. आप कार बनाना की कोशिश कर रहे हैं, आप साइकिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके आपको एक इमेजिनरी आपको वो एक इमेज प्रोवाइड करता है जो कि रिफाइंड होगा. आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसको आप अपने एकेडमिक पर्पसेस में यूज कर लेंगे. तो जस्ट बिगिन ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट एंड द टूल विल ऑफर सजेशंस दैट यू कैन देन चूज फ्रॉम. जैसा मैंने कि कहा कि अगर आप कुछ ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो वो उसको रिकॉग्नाइज करके वो सजेशंस देगा कि वेदर आर यू गोइंग टू ड्रॉ दिस फिगर. So if you, then you can choose. So change the event color, size, orientation, and add text before downloading for free. There are so many creative use of AutoDraw in the classroom, like creating quick sketch notes, infographic, and story illustrations, to name a few. तो इन सब एप्लीकेशंस का AutoDraw के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. आप लोग इसको जब खुद से यूज करेंगे तब आपको समझ में आएगा. अभी हम लोग इसका कुछ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. अगला जो एप्लीकेशंस है वो है गूगल म्यूजिक लैब. ये गूगल जो है क्रोम म्यूजिक लैब, ये बेसिकली जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स होते हैं, म्यूजिक के टीचर्स होते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. दिस गूगल एक्सपेरिमेंट allow students to explore music and its connection to science, math, and art. Try various tools within the website to create new rhythm and sound. Even जो म्यूजिक के जो स्टूडेंट्स या म्यूजिक के स्कॉलर्स होते हैं, ये गूगल क्रोम म्यूजिक को यूज करके वो लोग अलग एक नया रिदम बना सकते हैं, नया म्यूजिकल टोन क्रिएट कर सकते हैं. Even they study pattern within music, compose songs, or even they can also just play also. So there are so these are the important tools which we have already deal today. So this is all about the theoretical aspects. So now we can move to the practical parts. So one by one, the selecting tools, I will going to show you how you can use these Google tools in a very effective manner. सर एक प्रश्न है. हाँ हाँ बोलिए. कि बच्चों के प्रश्न अभी लेंगे या लेक्चर के बाद? ना लेक्चर के बाद. हो सकता है कि उनका कुछ क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस है ये प्रैक्टिकल पार्ट में शायद कवर हो जाए. ओके ओके सर, ओके. ठीक है ना.
अच्छा, हमारा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है क्या? हेलो? यस जी सर। सर। या, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग गूगल से ही शुरू करते हैं, गूगल सर्च से, सॉरी गूगल तो ऑलरेडी है ही, गूगल सर्च से हम लोग शुरू करते हैं। गूगल गूगल को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो ये फर्स्ट हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनका शायद हमने पहले कभी यूज नहीं किया हो। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो जहाँ सर्च हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सर्च टर्म, उसके नीचे में गूगल सर्च है और एक है आई एम फीलिंग लकी। तो सबसे पहले इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि व्हाट इज दिस आई एम फीलिंग लकी। आप लोगों में से शायद हो सकता है किसी ने इसको यूज किया हो, आई एम फीलिंग लकी, बट जो लोग यूज नहीं किए उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, हमने सर्च टर्म में डाला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पहले इसको हम गूगल में सर्च करते हैं, देखते हैं कि ये क्या देता है। अब देखिए, इन्होंने करीबन हमें 80 लाख डॉक्यूमेंट, हम 80 लाख रिजल्ट इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से हमें रिजल्ट दिया। और यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अगर हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को अगर हमने आई एम फीलिंग लकी क्लिक किया तो क्या दिया, आप लोगों ने डिफरेंस देखा ऑलरेडी। एक में जब हमने केवल गूगल सर्च में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को डाल के और हमने सर्च क्लिक किया तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करीबन हमें 80 लाख रिजल्ट दिए। और दूसरा, जब हमने आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक किया तो उन्होंने डायरेक्ट हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का होम पेज ओपन करके दे दिया। तो एक्चुअली दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टूल आई एम फीलिंग लकी, दैट आई एम फीलिंग लकी के थ्रू आपको जो सर्च टर्म के लिए जो है वो आपको रिलोकेट नहीं करना है। मींस आपको एक सर्च रिजल्ट आएगा, देन आपको क्लिक करना है, ऐसे ना करके वो आपको एक डायरेक्ट लिंक, आपको डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप उसके होम पेज को आपको प्रोवाइड करा देता है। तो इसमें हमारा टाइम सेविंग होता है। दूसरा है कि गूगल जो है कि अगर हम कुछ भी सर्च इसमें प्रोवाइड करते हैं, सपोज आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में आए दिन हम लोग लेक्चर अटेंड करते हैं, लेक्चर देते हैं। मोस्ट ऑफ द अस वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्लाइड्स, even using different types of photographs, even we are taking those photographs from the इंटरनेट से फ़ोटो हम लोग ले लेते हैं और अपने ट्यूटोरियल में ऐड करते हैं, इवन अपने रिसर्च वर्क में ऐड करते हैं, अपने पेपर में ऐड करते हैं। बट ये कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि जो हम लोग इमेज ले रहे हैं, वेदर दैट इमेज इज कॉपीराइट, किसी का लीगल उस पर कानूनी अधिकार है या वो फ्री में अवेलेबल है, इसके बारे में कभी हम लोग नहीं सोचते हैं। तो हम लोगों को कोशिश क्या, हम लोगों को चाहिए कि वो इमेज कॉपीराइट फ्री हो। तो हाउ वी कैन गेट द इमेज फॉर एनी our academic activity that may be free of cost, or free of cost even also the free of license even also. So suppose मैं एक सर्च करता हूँ प्राइमरी स्कूल पे मैंने सर्च किया है। प्राइमरी स्कूल्स पे मैंने मुझे इमेज चाहिए, जो कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स पे हमने सर्च किया इमेज और हम रैंडमली कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं इमेज और अपने
जो भी रिसर्च वर्क है या कोई प्रोजेक्ट वर्क है या फिर कोई रिसर्च आर्टिकल्स है उसमें हम, या कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं उसमें हम ले लेते हैं without giving any reference or something like that. So that may be the violation of copyright. So better you use the image which is copyright free. So suppose हमने प्राइमरी एजुकेशन पे इमेज ढूंढा और ये बहुत सारे इमेज हमें प्रोवाइड किया. नाउ वी हैव टू filter our result, and I will just put an delimitations. The result will be restricted to the here in the last option they are providing the usage right. इस यूसेज राइट से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं कि आपको कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए. You see here the Creative Commons license. This is basically denotes to the free. So you can use Creative Commons license, and if you click here, so now this you see here the Creative Commons license is coming, means these images are the copyrighted free. There is no any legal limitations for using this image. So hardly people are using these techniques for getting the image which is copyright free. So this is one thing. So we must use this copyright free material for our the other academic writings or the tutorials. Otherwise we have to provide the reference and proper references for that. Now the another thing I would like to touch upon you, that if simply I will search the primary schools, you see how many results they are providing. You see here the 3,30 lakh result they have provided. You see how your search may be precise and how it will be delimited within the purview of your रीडिंग कैपेसिटी. मीन्स आप, ये संभव नहीं है कि आप 3,30 लाख डॉक्यूमेंट को आप देख सके कि ये आपके लायक है कि नहीं. आपने जिस प्राइमरी स्कूल्स के बारे में सर्च किया है वही डॉक्यूमेंट रिजल्ट में आया है कि नहीं, या इन सब चीज़ों की आपकी ज़रूरत है. तो बेटर वी पुट एन पैरेंथेसिस साइन बिफोर एंड आफ्टर the search term. Now you see what will happen. You see 3,30 लाख से ये ऑलरेडी रिजल्ट 18 लाख पे आ गया है. And if you getting more precise, then you may also delimit your result by the language also. You see, अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं तो आप अगर इंग्लिश में अगर कोई डॉक्यूमेंट प्राइमरी एजुकेशन पे देखना चाहते हैं आप उसको डिलिमिट कर सकते हैं. वो कब का डॉक्यूमेंट होगा, लास्ट 24 आवर का होगा, अप टू ए वीक होगा, अप टू ए मंथ होगा, या अप टू ए ईयर होगा, हम लोग उस पे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं. वो किस फॉर्मेट में अवेलेबल होगा आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, डिलिमिट कर सकते हैं. हमें PDF फाइल्स केवल चाहिए तो आप वो उसमें कर सकते हैं. सो you see here the result has been very much delimited. You see here the 5 pages of result has been sorted out. So now we can have the better option, or we can go through this 5-page result one by one. But still I will recommend the scholars or the teachers to better not to search in the Google, you use the Google Scholar. So Google Scholar will provide you the scholarly materials from the different academic domains. So later on we will search on the we will go to the Google Scholar.
So in the Google search, there are a lot of different things also. So this is actually the basic thing which the student need to know. Other thing may be explorable once you will do this at your own, then you will get more information on that. I have even I have searched only the image. You may search the news part also. You can also have the search of books. You can also search the video also. So there are a lot of different search options from the Google is available. Now we can move to the Google Scholar. So by getting this all this Google facility, you have to better you have to have the Google account also Google, and better you if you are logging in the Gmail, then it will be better. So I'm going to show you the Google Scholar. Google Scholar. So this is the interface of the Google. As I have already logged in my Gmail, so it my profile is showing here. So if I will click on my profile link, it will open my profile here. So it will provide you the citations of your all the research paper, and they will create H-index for H-index and I-index for you. Even this Google Scholar is also used in the IRNS, which is helpful for getting the university ranking by the INFLIBNET. They are also using this Google Scholar for calculating the citations and H-index of the author and overall the H-index of the university also. So in this Google Scholar, this is very important tools for the research scholars and the academician. They must have to create their academic profile in the Google Scholar, and उनको गूगल स्कॉलर में एक आईडी क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक प्रोफाइल क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उनके जितने भी पब्लिकेशंस हैं उनको वहाँ पे लिस्टेड करना है. जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जो भी हमारा पब्लिकेशंस है ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे इनलिस्ट किया हुआ है. यू कैन ऑल्सो फिल्टर 2019 तक का पब्लिकेशंस को हमने यहाँ ऐड किया हुआ है. तो पब्लिकेशंस को आपको ऐड करना है. गूगल स्कॉलर आपके किस पब्लिकेशन, आपका जो रिसर्च वर्क है उसको किसने साइट किया अपने पेपर में, वो ऑटोमेटिकली काउंट करेगा. बट ये कंडीशन है कि वो जो रिसर्च स्कॉलर आपका पब्लिकेशन को रेफरेंस प्रोवाइड किया है, साइट किया है, दैट आल्सो मे बी अवेलेबल इन द डिजिटल फॉर्मेट, then it will only count. If that is available in the print format, then Google Scholar will not be able to count the proper citations of that reference. So this is very much important. Even you know, the recognition of the authors and the scholars is now even evaluating through this H-index and I-index. आप कितने अच्छे लेक्चरर हैं या कितने अच्छे प्रोफेसर हैं, आप बहुत अच्छा व्याख्यान देते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, या केवल इसी से डिसाइड नहीं हो जाता. आज के इस दौर में आपके पब्लिकेशंस को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसको रिव्यू किया है, कितने लोगों ने उसको अपने पेपर में संदर्भित किया है, ये आजकल के समय में एक टीचर्स का कितना उनका ख्याति है, ये जानने के लिए एक बहुत बड़ा टूल्स बनता जा रहा है. एक टीचर का कोई है जिन्होंने 100 पेपर लिख दिया है, लेकिन उनके पेपर को किसी ने साइट नहीं किया है. दैट मे बी हो सकता है कि किसी ने साइट किया हो, वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं हो. उसके अगर उस केस को अगर छोड़ दिया जाए, अगर ये इस तरह का अपवाद नहीं हो, तो फिर तो ये टीचर के लिए अच्छा संकेत नहीं है. टीचर का पब्लिकेशन को डेफिनेटली साइटेशंस मिलना चाहिए.
और उनके डिपेंड करता है उनका रिकॉग्निशन हाउ मच। सपोज जैसे मैंने बोला कि किसी ने 100 पेपर लिख दिया है और कोई साइटेशन नहीं, किसी का 5 पब्लिकेशन है उसको 1000 साइटेशन मिल गया है। some of even science faculty in the science stream and the social science, they are getting much more citations for their publications. It also depends upon the streams also. Some language streams, there you have some limitations for getting the online version of their documents. So Google Scholar will not be able to count the citations. So there is some lacuna also. But overall, this Google Scholar is very much important for getting the citations of the research scholar. Even this is also this is also the facility for providing the Google, the academic searching also. Like if you provide, as I have already searched primary education, primary school, you see what will be, you see जब मैंने इसको गूगल में सर्च किया था तो नियरली 3,30,00,000 डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया था। बट अगर हमने गूगल स्कॉलर में सर्च किया है तो इसने केवल 51,50,000 डॉक्यूमेंट दिया है। तो ये काफ़ी कम है, उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावे भी हम इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे अगर ये पहला डॉक्यूमेंट हम देखें और इसके बाद अगर कोई पीडीएफ का संकेत मिलता है तो इट मीन्स दिस इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू क्लिक ऑन दैट, दिस विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यू सी हियर, you see this is free full text available. So this Google search engine is giving the more precise search result than the simply Google. So even you can search through the year range also if you want to. अगर आप केवल 2021 का देखना चाहते हैं तो ये आपको और भी डिलिमिट कर दिया। आप देखिए कि रिजल्ट 63,000 में आ गया है। अगर आप 2020 तक का देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि कैसे कि 2 लाख हो गया। तो इवन यू कैन प्रोवाइड द कस्टम रेंज ऑल्सो। आप ऐसा नहीं कि ये जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 3-4 ऑप्शंस, उसी में से आप अपने से भी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको कब से कब तक का चाहिए। सपोज हमें 2020 से 2021 तक का चाहिए तो ये देखिए क्या प्रोवाइड करता है, 3,51,000। अगर हमें केवल 2021 का ही चाहिए तो देखिए क्या देता है। ये रिजल्ट वेरी कर रहा है। इवन अगर आप चाहते हैं कि साइटेशंस ना दे के साइटेशंस को छोड़ के दे तो ये वैसे भी देगा। इट ऑल्सो इंक्लूड द साइटेशंस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। इवन यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन अलर्ट विच आई विल लेटर डिस्कस ऑल्सो। So you can also create on that. You see, if you create on the create alert, आपको प्राइमरी एजुकेशन पे जो भी कुछ अगर ये गूगल स्कॉलर में अपडेट होता है तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। सपोज अगर कोई नया ऑथर प्राइमरी एजुकेशन पे अगर लिखता है तो आपको ईमेल में चला जाएगा कि एक नया कोई डॉक्यूमेंट गूगल स्कॉलर में ऐड हुआ है। अगर आपको अगर रिव्यू करना है या आपको देखना है, यू कैन विजिट ऑन दैट। So you can also create, that means through this Google alert you cannot bypass any new knowledge adding in your subject domain. You can create the alert using your subject domain. So this is all about the Google Scholar. In this Google Scholar there is also an advanced search using different types of limitations also, so we are not going on that. Now we will have a brief on the Gmail. As all of us we are using the Gmail, so some of the Gmail features may be aware, all of us. So I have opened my Gmail account here. So you see here, this is the left hand panel where you will find some default
default labels like inbox, snoozed, important, chat, sent. So the new mail will automatically come in the inbox. The important you may also create some labels for your that this is the chat option. What mail you have sent, it will be available in the sent mail like that. So how to create an email, definitely all of us, we are already aware about that. So I'm not going on that. I suppose that all of us, we are already aware about how to create an email. So I'm not going on that. So I am just making brief on some important aspect of the Google Gmail. So some of us, we have seen this question mark sign, but I think very few has a very curiosity to know about this. हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि जीमेल में ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, बट हम लोग शायद ही कोई उसको विजिट देखना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या है. बट इफ यू क्लिक ऑन दैट, जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, हेल्प, ट्रेनिंग, अपडेट्स. आप अगर क्लिक करते हैं अपडेट्स को तो वो आपको बताएगा कि जीमेल में क्या क्या नया अपडेट हुआ है, आप उसके बारे में जान पाएंगे. आप देखिए, लर्न व्हाट्स न्यू इन जीमेल. दिसंबर 2019 में क्या हुआ है, सेंट मेल एज एन अटैचमेंट. दिसंबर 2019 में गूगल ने अपने जीमेल में एक नया फीचर ऐड किया है. पहले था कि हम गूगल में कोई भी मेल क्रिएट करते थे तो अटैचमेंट के रूप में हम अपना कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई पीडीएफ, मीन्स कोई एक्सटर्नल फाइल हम उसमें अटैच करते थे. But there was not any option to attach an email which is available in our inbox in the Gmail. So ये फीचर पहले अवेलेबल नहीं था, बट दिसंबर 2019 में इन्होंने ये फीचर ऐड किया. और ये आप अपने कोई जीमेल में ही कोई अगर मेल लिख रहे हैं तो जीमेल का ही कोई एक पुराना या कोई दूसरा ईमेल आप उसको अटैच कर सकते हैं. दिस फैसिलिटी हैज बीन एडेड इन दिसंबर 2019. In November 2019, complete task within a message. In September 2000, change theme setting in dark mode for Android, iPhone, and iPad. You see here in the different months what they have done updates in their Gmail. They have already figured out in this help box. And even what you would like to know, even you can also get, means how to delete. You see how to delete contacts. कोई अगर नया यूजर है, उसने जीमेल क्रिएट कर लिया है बट उसको आ नहीं रहा है कि उसको जीमेल कैसे क्रिएट करना है, जीमेल में अकाउंट कैसे डिलीट करना है, जीमेल में कैसे अकाउंट ऐड करना है, एनीथिंग अबाउट द जीमेल, इफ यू search in the Gmail help box, the Gmail help will provide you a specific answer on that. So this is very important, but we are never hiding these question marks and not getting the exact information on that. Even they are organizing the training, they are giving the training on the different aspects of the Gmail. To that you can also be aware more about the Gmail. You see, this is the gear like option. Just besides the questions mark, you will find the all type of setting there. You can have different types of theme. Even you see here theme, different types of density you can set in your email. If you click on the all type of setting, you will find, if you click here, then you will find the general type of setting is mentioned here. The label, inbox, accounts and import, filter and block address, forwarding, add-on and chat on me. In the general, if you go through these options, you will find, I will just touch upon the important one. You see here the maximum page limit. It requires sometimes, if you are a very new user and you have a very less number of emails receipt in your Gmail, then you set this email 10 mail at a time, means in a one screen 10 mail will be displayed. You can set preferences according to your requirements, so you can change that. There is a very recent feature they have added, the undo send.
means if you have sent something, if you have sent some mail to someone, but later if you you recognize that oh sorry I by mistake I have sent that mail, so I want to cancel that mail. Earlier this facility was not available, but after some point of time you can have the facility to cancel that mail even also. So you have to set the priority on that. पहले ये जीमेल में फैसिलिटी नहीं था कि अगर आपने गलती से भी किसी को मेल भेज दिया कुछ भी, तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। एक बार जो चला गया वो चला गया। बट अभी जीमेल ने रिसेंटली ये ऐड किया है कि अंडू बटन है। जैसे अगर हम वर्ड में काम करते हैं तो कोई चीज़ हम अगर गलत हो जाता है तो हम अंडू करते हैं तो जस्ट प्रीवियस वाला में चला जाता है। तो वहाँ भी यहाँ भी यही फीचर अवेलेबल है कि जब हम अंडू प्रेस करते हैं तो जो भी मेल ऑलरेडी भेजा हुआ है वो उसको वापस कर लेता है within a certain period of time. What you have mentioned means they are providing the within the 5 seconds, within 10 seconds, within 20 seconds, within 13 seconds. Means maximum they are providing 30 seconds. If you within 30 seconds if you click on the undo button, यो आपका जो भेजा हुआ मेल है वो आपके वापस आ जाएगा। तो this type of feature is available. Recently they have added. इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स एक और होता है कि आप इसमें ग्रामर ऐड कर सकते हैं। ग्रामर का सजेशन अगर आप कुछ इसमें मेल में लिख रहे हैं, आपका ग्रामेटिकली कुछ मिस्टेक हो रहा है, इफ़ यू ऐड दिस ग्रामर सजेशन ऑन द जीमेल विल ऑटोमेटिकली गाइड यू, दे विल प्रोवाइड द सम ग्रामेटिकली करेक्ट स्पेलिंग्स दैट दिस मे बी दिस, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल। इसमें एक और ऑप्शंस अवेलेबल होता है जो कि सिग्नेचर होता है। रिसेंट अभी ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। जैसे रिसर्च स्कॉलर फैकल्टी को या लाइब्रेरियन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं विदाउट मेंशनिंग देयर एफिलिएशन, इफ दे विल कॉन्टैक्ट if any administrator, even the administrator will not easily recognize you, who are you. So if you mention your affiliation in your signature, then they will easily recognize you. So if you mention your affiliation in the signature, then what they will do, you need not to put every time your affiliation in your each mail when you are going to create. Like I have created my signature here, you see here I have created my signature in my mail. So जब भी मैं मेल लिखने जाऊंगा तो ये मेल में ये देखिए जो नीचे का पार्ट है, थैंक्स एंड रिगार्ड अजय कुमार शर्मा, ये जो मेरा एफिलिएशन है विश्व भारती जो भी है मेरा एफिलिएशन, ये मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिग्नेचर में ऐड कर दिया है। आई नीड ओनली टू क्रिएट माई टेक्स्ट मेल, मैं केवल टेक्स्ट मेल क्रिएट करूंगा, सब्जेक्ट और किसको भेजना है मैं भेज दूंगा, ये ऑलरेडी सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एंड इवन द फैकल्टी मेंबर अभी जरूर उनको ये ऐड करना चाहिए। इन एवरी कॉन्टेक्ट दे नीड टू मेंशन द एफिलिएशन इन द मेल। सो उसको बार बार रिपीट करने से बचने के लिए हम लोग उसको सिग्नेचर में ऐड कर देते हैं ताकि हमें बार बार ऐड ना करना पड़े। दूसरा इसमें एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि एक वेकेशन मेल होता है। वेकेशन मेल मतलब कि क्या होता है कि जब आप कहीं छुट्टियों पे जा रहे हैं या फिर आप बीमार हैं, आप अपना मेल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारण से आप व्यस्तता के कारण या आप कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, आप मेल एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उस दौरान में अगर आपको कोई कम्युनिकेट करता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं या आप किसको कॉन्टेक्ट करें? तो उस केस में आप वेकेशन मेल सेट कर सकते हैं। You see here you can create an out of office auto reply। अगर आप इसको ऑन कर देंगे और इसमें आप डेट बैठा देंगे, डेट आप पुट कर देंगे कि कितना से कितना तारीख के बीच में ये काम करेगा, और आप सब्जेक्ट आप जो भी प्रोवाइड कर देंगे दैट आई एम ऑन लीव, तो जैसे ही आपको कोई मेल करेगा तो ये इस सब्जेक्ट का मेल उसको चला जाएगा दैट आई एम ऑन मेल, आई एम ऑन लीव। और आप मेल में जो कॉन्टेक्ट्स लिखे रहेंगे, डियर रेस्पेक्टेड आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन ड्यूरिंग दिस, for some urgent work you may contact this or that person। So if you provide the contact number or email on that, then user can directly communicate on that, and I shall rejoin my office
ड्यूरिंग दैट। तो जैसे ही हमें कोई अगर मेल भेजता है तो मैं मेल देखूं चाहे नहीं, उसको ऑटोमेटिकली ये मेल चला जाएगा कि मैं आउट ऑफ मैं वेकेशन में हूँ, मैं छुट्टी में हूँ, सब्जेक्ट चला जाएगा उसको आई एम ऑन लीव to during this period whom he may require to contact. So this is very important feature of Gmail. So once if you are aware, then definitely you should use it. The second is the label. लेवल जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड पैनल में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पैनल लेवल क्रिएट हुए हैं। कुछ तो लेवल इसमें डिफॉल्ट होते हैं, कुछ आपको अपनी सुविधा अनुसार क्रिएट करना होता है। दिस इज एक्चुअली द मेल मैनेजमेंट, यू कैन से दैट। अगर आपको बहुत सारे मेल आ रहे हैं, सपोज आपको कुछ आपके अगर कुछ परिवार कुछ फ्रेंड्स आपको मेल करते हैं, तो यू सी हेयर यू कैन क्रिएट label through the friends. I have created through the mail label through the friends. मैंने फ्रेंड्स के नाम से एक लेबल क्रिएट कर दिया है कि जो भी हमारे फ्रेंड अगर कम्युनिकेट करते हैं उस मेल को मैं डायरेक्टली इस फ्रेंड वाले फोल्डर में रख देता हूँ। कुछ अगर हमें आईसीसी से रिलेटेड मेल आता है तो मैं इसमें रख देता हूँ। कुछ हमारा अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड आता है देन आई विल कीप दैट मेल ऑन द इनकम टैक्स रिटर्न, ITR में रख देता हूँ। तो इस तरह से आप अलग अलग अपना लेवल क्रिएट कर सकते हैं, मींस कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं मेल को मैनेजमेंट करने के लिए। यहाँ पर है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स। तो ये क्या करता है कि अगर ये आपका ये जो आप ईमेल अभी वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसको अगर कहीं आपको ले जाना है, उसके सारे कंटेंट को, सारे मेल को, तो आप इसके थ्रू इसको आप कहीं ले जा सकते हैं। या फिर आपके कहीं दूसरे मेल को अगर आपको लाना है तो आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं मेल को। आपका कहीं सपोज कीजिए आप इस मेल को अगर आप एक्सपोर्ट करके रखे हुए, कहीं बैकअप लेके रखे हुए हैं, बाय डिफॉल्ट अगर ये गलती से डिलीट हो गया तो आप इसका बैकअप जनरेट कर सकते हैं अकाउंट इंपोर्ट करके। आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ये इस सब्जेक्ट से मेल आता है तो ये इस वाले फोल्डर में ऑटोमेटिक चला जाए या ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। आप देखिए ये हमने दो फिल्टर क्रिएट करके रखा हुआ है। एक है कि अगर LIS फॉरम से अगर कोई मेल आता है, ये हमने मेल ID सेट किया हुआ है तो ये अप्लाई या ऑटोमेटिक लेवल में चला जाएगा LIS फॉरम में। कुछ मेल हमने ऑलरेडी फिल्टर करके रखे हुए हैं, अगर कुछ वोडाफोन से मेल आता है तो ये हमने सेट कर दिया हुआ है, ऑटोमेटिक ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं मेल को मैनेजमेंट करने के लिए। या आप ये फॉरवर्डिंग और पॉप्स मेल क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि सपोज आप मल्टीपल ईमेल्स यूज कर रहे हैं, आपका जीमेल में अकाउंट है, याहू में अकाउंट है, इस तरह से आपका 2-3 अकाउंट है और ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप सारे मेल को चेक कर सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप याहू का मेल आप अपने जीमेल में फॉरवर्ड कर लीजिए। याहू में जो भी मेल आएगा उसका एक कॉपी आपको जीमेल में चला जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाता है कि आप याहू का मेल ना देखे हुए भी आपको उसका हर मेल की जानकारी आपको जीमेल में मिल जाती है। या अपने जीमेल के सारे आपने अपने जीमेल के अकाउंट को अपने याहू पे फॉरवर्डिंग कर लिया तो या जीमेल में जो भी मेल आ रहा है आप उसको याहू में देख पाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या होगा कि कोई भी मेल आपको बाईपास नहीं हो पाएगा। आप सारे मेल को मतलब कि जो है कि निश्चित समय में आप उसको देख पाएंगे। तो ये जीमेल का इम्पोर्टेंट फीचर्स था। ये चैट एंड मीट, तो ये आप लोग चैट यूज कर ही रहे होंगे डेफिनेटली ऑल ऑफ अस, एंड मीट इज later we will also discuss meet also. So this is all about the I think Google Gmail. So now we can take the another application. YouTube. YouTube को हम डायरेक्टली यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से ही दिखाएगा। ये देखिए हमारा अकाउंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। और आप देखेंगे कि YouTube का कितना एकेडमिक यूसेस है।
आप अगर यूट्यूब पे अगर आप जा करके कोई भी चीज़ अगर आप देखना, सपोज हम कोविड-19 पे देखना चाहते हैं, कोई इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, कोविड-19 का सिम्टम क्या है, you see a lot of video tutorial they have archived by the different professions. Even in the academic field, if you search some academic field, like earlier I have searched primary school के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं, बहुत सारे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो each and everything what the search term is arising in our coming in our mind is available in YouTube. So you can use this YouTube. Even you can also create an YouTube of your channel. Even that is also very important aspect of the YouTube. Some teacher may create their on the YouTube channel for their classes, and the students may regularly use that. So just I will show you, we have created our library channel, Vishwabharati Library Network. So what we are going discussing today is already available in our this platform. You see here, so this so this type of YouTube can facilitate you in your teaching and learning process, that even the teacher may create a video of their classes and that may be accessible to his or her students. So YouTube is a very excellent tool for the teaching and learning process. The next tool which I would like to cover here, as we have already going to cross the 2 hours, so we have to delimit the session. So just I would like to include 2-3 more applications. Some of the tool like Google Autodraw. Most of us maybe not heard about this, so I would like to cover Google Autodraw. You see, this type of application is this. You see, start drawing. So I would like to draw an cycle. You see, I have drawn up to this mark, and Autodraw has using this artificial intelligence has already suggested. Do you mean this? Means this? But I was going to draw a bicycle, so I can pick this image. So this type of facility the Google Autodraw is providing. They are using the artificial intelligence. They will read your mind what you are going to draw.
You see, I was supposed to drawing a bus, so they are providing the bus, you see. So this is very amazing software, amazing tool is providing. Even some government students can also use this tool for their drawing purposes. So you see, I was trying to draw the trouser, so they are providing me. They have detected through the artificial intelligence. So this is very excellent tool. We must use this in our academic purposes. Another tool is, I would like to tell you, the Google site. Since I have login in my account, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले से ही अपने लॉगिन अकाउंट जीमेल में लॉगिन करके रखा हुआ है, तो they will provide you the blank template also, and the template or the website you have designed they will also provide. So like I have created my Google site for my personal. So just you see, this is the preview of my website. So the faculty may create a website for their classroom. They may create a different the scheduling of their classes, their class routine they will provide. Likewise, any faculty member create their personal web page, they can provide their educational details, you see here. Likewise, even scholars may create also their websites using by mentioning their research scholarly publications, and all the information they can provide on their Google Scholar websites. So this is also very much important tool of the Google, and the creation of this Google sites is very much easy. If you are little aware about the even comfortable with working on the Google Microsoft Word, then you can use the same here. The same expertise may be used here. It is just like Microsoft front page. They are providing in the same way for creation of their website in the Google sites. The another thing I would like to, as I already have touched upon, the Google Alert. This is also important for us, as because most of the students, most of the teachers are just would like to have all the information on their related fields. So you see here, if you log in on your account and you click the URL on google.co.in/alerts, they will provide the options to create
alert on a specific term. Like you see here, I have created 2 alert, Aurangabad, Bihar and Vishwabharati. Means any information if added in the Google on the key term of the Vishwabharati, that the Gmail will give me an alert that this information from the Vishwabharati term or from the Aurangabad term has been appeared in the Google, so you must visit. So some student may create which are looking for the job from the field of the, you see, the information scientist, or the you see some of from the engineering field, may create their respective field key term and may have the alert on that, so that the Google may send the alert on that. You see, if I have created, as I have created alert from the Vishwabharati, definitely some mail from the Vishwabharati and the Google has alerted me. You see here. We'll just show you. How the Google will send you alert. You see here the Google alert I have received from the Aurangabad, Bihar. So any information if updated from your search term, the Google alert will alert you that this information has been published in Google. So you visit, or you must aware about that. So this is all about the Google and Google tools. So I just would like to winding up the session. So if you have any questions, then you feel free to ask. So thank you, sir. This is all about from my side. Thank you so much, Ajay sir, and you have treasure to share with us, and it's like, I mean, we were mesmerized and still learning several things, exploring several, as if we are going on some excursion and, you know, seeing different sites. We all were here on the Google, we keep on searching, but never been familiar that it has this much option. So thank you so much. Now, sir, there are lots of questions pouring in the chat box. So, yeah, thank you. Yeah, we can take. But I'm picking, due to time constraints, I'm picking some specific question. Yeah, definitely. Even you can communicate my email also. So if they have any specific queries, then directly they can send on my mail also. Such a wonderful gesture, sir. Sir, ये पहला सवाल मैं ले रही हूँ नेहा प्रजापति का, and she wants to know that how to create. I'm clubbing 3 questions, sir. Yeah. How to create Google Plus account, how to create Google Forms, and what is rubric in Google Classroom. So you have covered. What is rubric in Google Classroom? Yeah, actually, for getting all this facility, first requisite thing is we have an Gmail account. The first criteria is the Gmail account, as I already told you. As and when we have the Gmail account, then we will get all this facility, as the time limit is already crossing 2 hours. So I think there is some network connection issue. Yeah, there may be some network connection. Due to that, I have off my video even also. So here the very low bandwidth is there. So actually, due to time constraint, I have not covered all the things, but the Google form is also very simple things to create. And just like the user is creating any social networking tools, like the creation of any account on the Facebook or the Twitter, the same way the Google Plus account is also maybe created. And the Google form is something different, which later on I can show him, as because the time constraint is there. Otherwise, I may include that part also here. Yeah. Hello. जी सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि ये मोबाइल से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कि डेटा लो की वजह से भी नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा होगा, और बैंडविड्थ तो वैसे ही कम है यहाँ पे, इसलिए मैंने अपना वीडियो भी ऑफ कर दिया। आवाज अच्छे से आ रही है।
एक्चुअली में क्या है कि टाइम कांस्टेंट की वजह से मैंने सारे टूल्स को कवर अप नहीं कर पाए, ऑलरेडी 2 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत सारे टूल जो कि गूगल फॉर्म्स था, इवन और भी बहुत सारे टूल्स जो कि इम्पोर्टेंट थे नहीं कवर हो पाए हैं। तो ये हमारे हो सकता है कि दूसरे वीडियो पे अवेलेबल हो, आप उनको शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अदरवाइज इफ दे पर्सनली कॉन्टेक्ट मी आई विल लेट देम नो। हेलो Ajay sir, there is one question. Yeah, am I audible? हाँ हाँ, या कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम ले सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए तो फिर हमें उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा लेटर ऑन, इफ टाइम अलाउ, और अदर इन द अदर सेशन वी कैन हैव। Yes sir. Sir, there is one question from a participant. You have elaborated much on Google Earth also. Yeah. Is Google Earth some way helpful in computing maths equations? Maths equations means math equations not, but they can have a certain they can help in the mathematical calculations also, like in the geography classes there have a like calculations of in the two longitude how many distance are there, means I think मीन्स दो अक्षांश के बीच में कितना दूरी होता है, दो देशांतर के बीच में कितना दूरी होता है। तो थ्रू दैट द गूगल अर्थ they can have a mathematical calculations on the geographical sites. Okay, so through that even they can also calculate they can measure the distance also from one point to the another point through this Google map or Google Earth. They can calculate the actual distance also. Okay, so I hope गायत्री जी आपकी क्वेरी क्लियर हो गई है। अजय सर, एक प्रश्न है। नेपाल दास जी जानना चाह रहे हैं कि कोई इमेज कॉपीराइट है, इसको जानने का कोई उपाय है क्या? हाँ, मैंने आपको बताया था सर, मैंने इस वीडियो में बताया है कि कॉपीराइट फ्री कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, अगर उन सबको छोड़ दिया जाए तो बाकी कॉपीराइट ही है। ठीक है, या फिर अगर आप उस इमेज पे जाएंगे तो आपको वहां पे लिखा रहेगा, आप उसको मतलब कि देख पाएंगे कि वो कॉपीराइटेड है कि नहीं। आप कॉपीराइट फ्री इमेज कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में। जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई ऐसा इमेज यूज करते हैं तो हम इसके पहले चेक नहीं करते हैं कि वो कॉपीराइट फ्री है कि नहीं, इसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होगा, लिहाजा आपने पहले ही बता दिया है कि वो किसी और सत्र में कर लेंगे। कल हमारा गूगल के आधे या 1 घंटे का सत्र है, हमने रखा हुआ है 12 बजे से 12-12:30 बजे के आसपास। तो जो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे हम अजय सर के पास टाइम होगा उनको बुला लेंगे और आप लोगों के वैसे प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। साथ में हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी है, वो भी आपके ऐसे प्रश्नों का उत्तर अवश्य प्रदान करेगी। फिलहाल कुछ जो ऐसे इंडिविजुअल प्रश्न भी होंगे वो आप हमें मेल पे भी कर सकते हैं, तो हम उनको पर्सनली भी कम्युनिकेट कर देंगे। जी जी बिल्कुल, हाँ, ये सबसे बढ़िया रहेगा कि उनके प्रश्नों को लेकर के आपको मेल कर दिया जाए और आप उसका उत्तर दे देंगे, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जैसे वो जानना चाह रहे हैं कि आप उन्हें गूगल फॉर्म कैसे बनाया जा सकता है। अथवा एक प्रश्न और है जो मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में कि गूगल स्कॉलर पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, अथवा गूगल प्लस जो होता है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो ये सब सारे प्रैक्टिकल प्रश्न है जिनका आपको करके दिखाना होगा, लिहाजा उत्तर आपको प्रश्न डायरेक्ट आपको दे देंगे, उनका बच्चों का मेल भी दे देंगे, आप उन्हें डायरेक्ट। बिल्कुल, मैं उससे उनको रिलेटेड आपको उनको मटेरियल भेज दूंगा, दे विल क्रिएट देमसेल्व्स आल्सो। ओके 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 जी। मेरे हिसाब से आज आपने बहुत ही अच्छा और बहुत उम्दा व्याख्यान दिया। गूगल टूल्स पे आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक तरीके से अपनी बात को रखा। मुझे लगता है जो बच्चे जुड़े हैं, प्रतिभागी लोग हैं, अथवा स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर हैं, अथवा टीचर्स हैं, वो सभी को किसी न किसी रूप में फायदेमंद होगा। और कुछ तो अध्यापकों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैं भी
कभी ये फिल्टर इत्यादि नहीं करता था मेल में जा करके। और आप वेकेशन पे जा रहे हैं अथवा कहीं जा रहे हैं, उस दौरान आप कैसे ऑटो रिप्लाई वाला ऑप्शन डाल सकते हैं। आपने सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से बताया। इसके अलावा गूगल टूल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, चूंकि समय बहुत कम सारी था चीजें हैं जी उसके सर, बहुत बाद सारी भी चीजें आपने हैं। बहुत सारे मैं कह विषयों को सकता हूँ कि मैंने समझाया। गूगल टूल्स का 25% कवर किया है सर। हाँ जी, आपने सिर्फ जैसा कि आप बता रहे हैं कि 25% ही कवर कर पाए हैं, चूंकि समयाभाव था। और कुछ प्रतिभागी स्वयं भी प्रश्न पूछना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि सत्र अपने समाप्त हो चुका है एक तरह से, लिहाजा हम उन प्रश्नों को आपको मेल करेंगे और आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप उनका उत्तर उनको मेल कर देंगे, ये ज्यादा बिल्कुल बेहतर बिल्कुल, हम रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सर कि हमारा ईमेल आईडी अपने प्रतिभागी को आप शेयर कर दें, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगा उनके दिमाग में, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। अवश्य सर, अवश्य, बिल्कुल। और इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि एक परंपरा है, इतना अच्छे व्याख्यान के बाद धन्यवाद तो बनता ही है। मैं डॉक्टर उमेश सर से निवेदन करूंगा, अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं, तो अजय शर्मा सर का अपने आधिकारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर अजय शर्मा जी को जितना भी धन्यवाद किया जाए कम है। बहुत सारी चीजें, लगभग 15-20 साल से मैं कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, और उसके बावजूद भी इनके व्याख्यान में कुछ चीजें ऐसी लगी जिसको मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया था, और खासतौर से गूगल सर्विसेज के बारे में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी बता रहे हैं कि ये केवल 25% ही लोगों को बता पाए हैं, और भी हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में ये बताएंगे। तो इतना ज्ञानवर्धक व्याख्यान रहा। तो इनको एक तरह से कहा जाए तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध रहे हैं, तो अपने परिवार जैसे हुए। मैं भी वहाँ का छात्र रहा हूँ, डॉक्टर प्रमोद भी रहे हैं। तो इनको धन्यवाद कहना तो जैसे स्वयं को धन्यवाद कहना हुआ, लेकिन चूंकि औपचारिकता है और ऐसा करना आवश्यक है, एकेडमिक्स का ये प्रोटोकॉल है, इसलिए हम सारे लोग इनके आभारी हैं और बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मैत्रेयी कॉलेज की ओर से भी, एनेबलिंग यूनिट मैत्रेयी कॉलेज की ओर से, और अपना स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज की ओर से भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और आशा करते हैं कि भविष्य में जब भी हम लोग याद करेंगे तो कष्ट देंगे तो इसको स्वीकार करेंगे और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करेंगे। आप सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर अजय शर्मा जी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर से 4 बजे मिलेंगे। आगे जैसा भी होगा डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह बताएंगे आप लोगों को। सर, कल का जो अभ्यास सत्र है उसका समय थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, सारे प्रतिभागियों को सूचित कर दूं। कल का सत्र 12:30 बजे शुरू होगा और आधे या 1 घंटे का सत्र होगा। उसमें अजय शर्मा सर अगर उपलब्ध होंगे तो वो अभ्यास कराएंगे, अन्यथा हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के जो सदस्य हैं वो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बातों को जो अजय शर्मा सर ने बताया वो समझ लिए हैं। कुछ ऐसा रहेगा तो उनको भी हम वो कर लेंगे। अगर सर के पास समय हो तो मैं निवेदन करूंगा कि सर जरूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि सत्र तब तक संपन्न नहीं होता या तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक हम लोग एक बार सबके साथ ग्रुप फोटो ना लें। तो मैं आप सभी को ग्रुप फोटो अपना वीडियो ऑन करने का ऑप्शन दे रहा हूं। आप सारे लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए, और जो हमारी टेक्निकल टीम है उससे मैं निवेदन करता हूं कि एक अच्छा सा फोटोग्राफ अवश्य ले। सर अजय शर्मा सर, हाँ आप भी को, हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास समय है, आप आराम से बैठ करके विधिवत अपने वीडियो ऑन कीजिए, और ये अनमोल पलों को हमारी टेक्निकल टीम कवर कर रही है। कुछ लोग इस बात के लिए चिंतित हो रहे थे कि भाई हमारा अटेंडेंस में तो नाम ही नहीं आया सर जो आपने भेजा है। उनके लिए जानकारी के लिए बता दें, उस समय तक जितने हमारे पास टेक्निकल टीम ने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे हमने उसे भेज दिया था। उसके बाद लगभग 50 स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। जो लोग आज मौजूद हैं उन सभी के अटेंडेंस लगाए जा चुके हैं, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। और अजय सर आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, और कल अगर आप धन्यवाद सर, 1 घंटे हमें समय और देंगे तो और अच्छे लगेंगे। कोशिश करूंगा सर, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हिसाब से हमारी टीम ने इन अनमोल पलों को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। मैं शीघ्र ही प्रतिभागियों से इसको शेयर करूंगा।
सविता जी भी आ गए हैं। मुझे लगता है सविता जी का नेटवर्क थोड़ा सा बीच में समस्या रहा, लेकिन बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा आपने मॉडरेट किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आज जितने प्रतिभागी जुड़े उन सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ अपनी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, विशेष तौर से ज्योति मैडम जो शुरू से सुबह से ही लगी हुई हैं, सविता जी हैं, नूपुर जी हैं, स्वस्ति जो आज कैमरे के सामने नहीं आई लेकिन कैमरे के पीछे रह के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अजय शर्मा जी बहुत व्यस्त थे, थोड़ी सी उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या थी, उसके अलावा भी कुछ समस्याएं वहाँ पे चल रही हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए मैं हृदय से उनका आभारी भी हूँ, उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। एक बार हम लोग फिर से कल 12:30 बजे मिलेंगे। जो डीएलएम मोड वाले हैं, मैं देख रहा हूँ बीच में व्यवधान हुआ, कुछ दिन कार्यक्रम क्या रुका, लोग जो है थोड़े से लापरवाह हो गए हैं, लिहाजा उन सबकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर अटेंडेंस उनकी कम होगी तो हम डीएलएम मोड वालों को डीएलएम से हटा के एसएलएम मोड में कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डीएलएम मोड के लिए रिक्वेस्ट बहुत सारी है, संख्या सीमित है, इस वजह से उन्हें हमने नहीं दिया है। अब उनके स्थान पे उनका रिप्लेसमेंट हम खोज रहे हैं, जो बच्चे यहाँ रेगुलर रह रहे हैं, डीएलएम में उनका नाम नहीं है लेकिन वो चाहते हैं उनका नाम रखेंगे। आप लोगों से जो भी जुड़े हुए हों उन्हें सूचित कर दें कि कल से क्लास में रेगुलर विद्यमान है। और हाँ, जिन लोगों ने इनेबलिंग यूनिट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से आग्रह है कि इनेबलिंग यूनिट का यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहें, आप उन्हें देखकर उनका अवलोकन करें, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, उसके पश्चात अपने उत्तर दें। इनेबलिंग यूनिट मैत्रेयी कॉलेज आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे, उसका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ सारे वीडियो हमारे पड़े हुए हैं। साथ ही हम इन वीडियो का एडिटेड वर्जन भी शीघ्र ही आप लोगों को प्रदान करने वाले हैं, वो पूरा उसका वेबसाइट बनाया जा रहा है, आप उसको जब चाहेंगे जिस रूप में जब चाहेंगे इसको देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं और अपने भविष्य के कार्यों में इसका सदुपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आज का जो व्याख्यान था बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। मिलते हैं कल 12:30 बजे।